एरोबा का रेसिपी, और ये है यम का उसका ब्रांच, और ये है नागा धनिया, ये है किंग चिली, ये है बैम्बू शूट, और ये है उसका कुछ रूट होता है, तुनिको बोलते हैं मणिपुर में, और इसका रूट है, ये स्मेल आती है इसमें। टोमेटो और 2 आलू डालेंगे, फिर पेस्ट वेस्ट कर देंगे गाइस। तो गाइस वीडियो में रहना। What's up guys, welcome back to my new video. तो guys आज मैं खाने जा रहा हूँ guys, which is very special. तो guys मैं आज खाने जा रहा हूँ इरोम्बा, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। ये इरोम्बा है स्पेशल, ये वो एक पत्ता के आते हैं, वो कोचू आते हैं ब्रो, कोई कोचू बोला जाता है, कोई इसको स्टिकी पोटैटो बोला जाता है, तो उसका ब्रांच होता है खाने वाला, तो उसके साथ बनाया। और ये है रॉ फिश, एंड गाइस ये काफ़ी टाइम के बाद बहुत डिलीशियस है। ये है पोर्क पिकल, एंड गाइस ये है करी में है, ये सब्री, और कोई भाषा में बोलता है तकथुई बोलता है कोई कहता है। Alright guys, without wasting any time, let's अंथूरे गाइस, इसको कोई अंथूरे बोलते हैं, कोई हमारे भाषा में इसको सब्री बोला जाता है गाइस, और कोई भाषा में क्या बोलते हैं गाइस कमेंट में बता देना। तो शुरू करते हैं गाइस तंगथूरे को। गाइस लेट्स स्टार्ट इट। आज तो सब स्पाइसी है, ये भी स्पाइसी है, ये पिकल तो A1। कच्चे इरोम्बा में मैंने बैम्बू शूट भी डाला हुआ है, जिससे ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है, फिर मज़ा आ गया।
ये पोक तो रबर की तरह very good.
It's not good. ओके तो गाइस ये रहा मेरा आज का मेरा मुकबांग, कुछ इस इरोम्बा और पोक पिकल और फिश, और ये है एक नंबर गाइस, एक टेस्टी। तो गाइस बिल्कुल आप लोग भी ट्राई कीजिए घर पे, और गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो क्या रहना चाहिए, तो आप लोग के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगे गाइस। तो गाइस प्लीज़ आप मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि आप लोग वीडियो देखता है और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करता गाइस। तो प्लीज़ मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करो गाइस। आप लोग की कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई वीडियो में कोई एडिटिंग में दिक्कत, और मेरा वीडियो में कुछ इम्प्रोवाइजिंग के लिए। तो गाइस ये रहा मेरा आज का मेरा वीडियो, मेरा मुकबांग। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना गाइस। तो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।